Okay, good morning to all of you. Today, others are on the way. Okay, am I audible to online students? Not properly, ma'am. Yes. Not only. Okay, now. Yes, Ma'am, ma'am. your Now, voice is breaking actually. Good morning, students. I'm in your class right now. Bluetooth connected. good morning, ma'am. Maintain little distance. Maintain little distance. Yeah, you identify all. You understand? Yeah. Also, Dipil. Udayraj. Udayraj, you came. Good. Rohan. Darshan Parmar. So you people, where are your other friends? 1, 2, 3, 4, 5, 6 coming. Okay. Okay. I've started the camera even. पढ़ना जरूरी तो है, थोड़ा दूर बैठना ज्यादा जरूरी है क्लास में. इफ यू आर फार इनफ इट इज.
સર કઈ કેવું છે તમારે Your class counselor. Am I audible? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Okay. So I think am I clearly audible to our students, right? Yes, ma'am. Okay. Okay, so what we have discussed in the last session. First of all, good morning to all of you. You are a bit late today, but it's okay. It's your first day. It happens. आदत नहीं है ना? घर पे होते तो बस ऐसे ब्रश करके बैठ जाते. Okay, so what we have discussed, HTTP message format, right? Okay, so it's clear. क्या है पूरा concept पता है? HTTP message format, or is it required to revise it? It's required. Okay, I expected this answer only. Because of? Okay. तो हर बार मंडे को फ्रेश स्टार्ट करना है. Okay, no problem. We'll do some revision of HTTP message format because some students required the revision. So we'll start with that. Okay, so first of all, let me share my screen. Is it visible to online students? Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. Yes, ma'am. So first of all, we'll start with HTTP. So कोई बताएगा HTTP stands for Hypertext Transfer Protocol, right? Now, why we are using the HTTP? As we all know that whenever we are requesting for any URL from the browser, the HTTP protocol works, right? But for HTTP request and HTTP response, we require some kind of a message format, right? Whenever the client and the server are communicating with each other, for that HTTP message format is required, right? So we all know that HTTP works on client server model. We require at least two entities for the communication, right? So whenever the client is requesting for any URL to the server, it sends an HTTP request message, right? As we have already seen at the starting of the session that how the client and server are communicating with each other. We have seen the basic diagram, right? So whenever the
client is requesting, it sends an HTTP request message. Now today we'll discuss what is the format of HTTP request message, right? So as you can see here, this is the message given here, right? We have already discussed. So HTTP request message consists of this basic structure. The 4 lines will be there in the HTTP request message. So the first 4 line is request line. Obviously, it is a request message. So first line request message hoga, request line. Second is headline. Third is blank line, and fourth is entity body. Right now, here the entity body is nothing but we can say it's a pure message. It's the meat of the message we can say. Right now, if I say about the request line, then request line consists of 3 fields: method, URL, and version. Now remember these 3 fields. Now we'll look at the message. Now if you look at the message, you can see here, is it visible? दिख रहा है ना? Fonts छोटे. So you can see here, let me just थोड़े font बड़े कर देती हूँ. Now I think it's visible somewhat, right? So you can see here this request message. The first is get. So get is nothing but there are mainly 5 methods that are used in the request message: get, post, head, put, and delete. Right? If you found any of these 5 methods in the message, then we can say it's a request message. Right? Next is slash, that is some directory page.html. As I have said that the whole URL is divided into 2 components. First is host of the server, and whatever the things which is followed by the slash, that will be the object, right? That is the object path. कोई भी अगर वेबसाइट सर्च करते हो, लेट्स से कि मारवाड़ी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट सर्च कर रहे हो, तो मारवाड़ी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट क्या है? www.marwadiuniversity.ac.in. Now let's say if I'm looking for the specific in the Marwadi University website, let's say कि हमारा campus है, तो campus हमारा बहुत popular है, right? So let's say I'm looking for the campus, so मैं क्या लिखूंगी? www.marwadiuniversity.com/ उसके बाद मैं home page पे जाके campus पे क्लिक करूंगी, it will be like /campus. तो वो campus वाला पार्ट है, वो क्या है? ऑब्जेक्ट पार्ट. बट आगे जो URL है, that is www.marwadiuniversity.ac.in, that is the name of the server, right? So if you look at this, the URL is www.someschool.edu और उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट क्या है? This is the object part, some directory page.html, that is the object. Then next is version. So if you look at this, it is mentioned here that HTTP 1.1. अब HTTP 1.1 क्या है, कोई बताएगा? We have this HTTP 1.0 and 1.1. थोड़ा फ्लैशबैक में जाओ. सीरीज? फ्लैशबैक में वेब सीरीज याद है. वो भी है, सैटरडे संडे गया है तो ऑब्वियसली. persistent नॉन persistent जैसा कुछ याद आ रहा है? persistent कनेक्शन, नॉन persistent कनेक्शन, नहीं? किसी को नहीं? yes, from online student. What do you mean by HTTP 1.1? Yes, Ma'am, Bhavdeep? it is the version of the HTTP.
Oh. Okay, have this. Okay, good. HTTP. We can say this HTTP 1.1 and 1.0 about the connection used by the request. Hello, ma'am. We have already discussed the two types of Ma'am, connection your voice is that breaking. HTTP connection and non-person connection. Now let's find a person connection. So person होगा HTTP 1.1 Ma'am, you are not version will audible be properly, connection ma'am. point रहता है, right? And have that Ma'am, HTTP Hello, ma'am. 1.0, right? Hello, ma'am. Persistent, non-persistent याद जाना पड़ेगा, right? And then I Hello, move ma'am. ahead. So person में होगा that TCP connection established. Yes. Ma'am, you are not properly audible, ma'am. Okay. Am I audible? Ma'am, your voice is breaking and your Yes, screen ma'am. is also not Actually, visible. there is a yes, Ma'am, your screen is not visible and you are not audible also. yes. I know my voice is breaking.
Okay, am I audible now? Online students, Yes, ma'am. clearly audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Clearly audible now. Okay. So I hope so there won't be any interruption. Okay, so I'm revising the persistent and non-persistent connection. So persistent में क्या होता है? We all know that for any communication we require to establish a TCP connection, right? If it is working on the client server model, so if the client is requesting for anything, the TCP connection needs to be established between them, right? कोई भी communication है, so उसके लिए if we want a reliable communication between the two entities, generally we are using the TCP connection, right? So TCP connection में persistent और non-persistent से क्या relevant है? We can say that if it is a persistent connection, then once the TCP connection is established between the client and the server, we can request for many objects. जितने भी चाहे उतने object के लिए हम लोग request कर सकते हैं, right? Let me show you a diagram. So this is a HTTP with non-persistent connection, right? So अगर आप पहला diagram देखते हो, then it is a non-persistent connection. तो इसमें क्या हो रहा है? Look at this. This is the client and this is the server, right? Now here the client is requesting for establishing the connection between them. So the first request will be the connection establishment between the client and the server, right? Now there is a response at the server side. So server will send back the response by accepting the connection request message, right? So the second you can see, second handshake you can see is the accept request which has been sent by the client for the connection establishment, right? So ये पूरा handshaking process पे चलता है. We have discussed the three-way handshaking process. So if you look at this, ये सारे concepts एक दूसरे से related है, right? So यहाँ पे आप देख सकते हो, first handshake is this, that is for connection establishment. Second is for accepting the connection request, and the third is for requesting the file. So ये three-way handshaking process clear है. Back to non-persistent connection, you can see here कि एक बार TCP connection establish हो गया between the client and the server. Now the client and the server are knowing each other, right? आप दूसरे को एक दूसरे को पहचानते हैं, so आप कुछ भी उसके पास से मांग सकते हैं, right? So we can say requesting the object. तो अब client क्या कर सकता है? Server से object के लिए request कर सकता है that I want this object that is already stored at in your database. So it is requesting the object to the server. Now सर्वर क्या करेगा कि उसके पास वो ऑलरेडी डेटा है और वो ऑलरेडी फाइल उसके पास है, तो सर्वर क्या करेगा, वो फाइल को एक लिंक में भेज के उसको ट्रांसमिट कर देगा, राइट? सो यू कैन सी हियर रिस्पॉन्स मैसेज. फर्स्ट इज requesting the object, that is client is requesting for any file to the server and the server will send back the response to the client by with the help of the response message. तो यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स दिख रहा है, तो वो पूरा किसके ऊपर वर्क कर रहा है? दैट इज HTTP रिक्वेस्ट मैसेज एंड HTTP रिस्पॉन्स मैसेज. बट अगर नॉन परसिस्टेंट कनेक्शन है, देयर इज वन कंस्ट्रेंट कि सर्वर जब ऑब्जेक्ट भेज देता है क्लाइंट को, सर्वर विल आस्क फॉर टर्मिनेटिंग द TCP कनेक्शन, राइट? एक बार क्लाइंट ने एक ऑब्जेक्ट के लिए रिक्वेस्ट किया, सर्वर ने वो फाइल भेज दिया, so server will terminate the connection or we can say TCP connection will be closed after sending back the response to the client, right? अभी दूसरा ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट करना है सेम सर्वर को, तो क्या करेंगे? फिर से क्लाइंट को TCP कनेक्शन एस्टैब्लिश करना पड़ेगा. यू कैन सी हियर कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ट्रांसमिट हो गया, क्लाइंट को मिल गया वो ऑब्जेक्ट. जैसे ही क्लाइंट को वो ऑब्जेक्ट मिल जाता है, तो TCP connection will be closed. Now the client wants to request for the another object. There is one separate TCP connection that is to be established between the client and the server. So you can see here कि यहाँ पे connection break हो जाता है. That means the TCP connection is closed now, right? Now again I want to request for the second object. So क्या होगा?
requesting for connection establishment. There will be a response from the server side, and again there is a request of an object to the server, right? And there will be again a response. Now let's say कि अगर कोई एक वेबसाइट है जिसके अंदर एक बेस HTML फाइल तो होती ही है, right? And I want to access the 10 images. So in total there will be an 11 objects that I want to access, right? तो वो 11 ऑब्जेक्ट के लिए अगर मैं नॉन परसिस्टेंट कनेक्शन यूज कर रही हूँ, I can say that I have to establish 11 टाइम TCP कनेक्शन, राइट? जितनी भी बार मुझे ऑब्जेक्ट एक्सेस करने हैं उतनी बार मुझे TCP कनेक्शन एस्टैब्लिश करना पड़ेगा, राइट? तो परसिस्टेंट में क्या है, एक बार अगर TCP कनेक्शन एस्टैब्लिश हो गया, वी कैन रिक्वेस्ट फॉर मेनी ऑब्जेक्ट. तो ब्राउजर में कौन सा होगा? ब्राउजर में कौन सा बाय डिफॉल्ट कौन सा वर्जन यूज करता है हमारा ब्राउजर? ब्राउजर में तो ऐसा नहीं है कि भाई चलो एक वेबसाइट विजिट की फिर क्लोज हो गया कनेक्शन, फिर से कनेक्ट किया, फिर से, ऐसा तो नहीं होता है, राइट? एक बार कनेक्शन एस्टैब्लिश हो जाता है, वी कैन सर्च फॉर मेनी थिंग्स वी वांट, राइट? तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ब्राउजर बाय डिफॉल्ट persistent connection यूज करता है, right? So that is the difference between the persistent and non-persistent connection. If you look at the persistent, the diagram will be quite different. So you can see here, this is the diagram of persistent connection. So यहाँ पे पहले step में क्या आता है? Connection request, that means establishing the connection between the client and the server, right? There is a acceptance message from the server that yes, the connection is established. Then requesting file 1, response file 1, requesting file 2, response file 2, requesting file 3, response file 3, right? तो यहाँ पे सिर्फ एक ही बार कनेक्शन एस्टैब्लिश हुआ, right? पहले हैंडशेक में उसने कनेक्शन की रिक्वेस्ट की, क्लाइंट ने, सर्वर से रिस्पॉन्स आया, yes I have accepted your connection request. फिर उसने रिक्वेस्ट की फाइल के लिए, रिक्वेस्ट फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3, फाइल 4, देयर विल बी अ रिस्पांस मैसेज फ्रॉम द सर्वर साइड. जब अपन क्लाइंट से सर्वर पर रिक्वेस्ट करते हैं तो अपना जो बस एक ही टाइम ये रिलेशन एस्टैब्लिश करता है, तो जो अपना डेटा होता है वो सर्वर सेव करके रखता है. हाँ, देयर विल बी, हाँ ना, सर्वर जो है वो बहुत सारे टाइप, मींस सर्वर्स आर यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पस, right? There are many types of the servers, we can say mail servers, proxy servers, database servers, right? So all that data will be temporarily stored in the proxy server. जो हमारा वेब कैशिंग का कंसेप्ट है उसके बाद का we'll discuss कि वेब कैशिंग जो प्रॉक्सी सर्वर है, जो भी हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं that will be temporarily stored in the proxy servers, right? कोई भी डॉक्यूमेंट मास्टर अपना सेव करते हैं वो भी इतनी जाएगा किसमें? जैसे सपोज अपन ने फेसबुक पर हाँ, वो पूछता है कि डू यू वांट टू सेव, हाँ, तो वो भी वेब ऑब्वियसली, हाँ, रिक्वेस्ट मैसेज तो पहले जाएगी सर्वर साइड, राइट? तो अगर सेव करते हो तो वो अपनी सिस्टम में सेव होता है, राइट? वो क्या होता है कि हम दूसरी बार करते हैं तो ऑब्वियसली हमको लॉगिन पासवर्ड नहीं डालना पड़ता है, so that will be stored in our system, बट जाएगा तो उसी रास्ते से, राइट? HTML, HTTP 1.1, हाँ, HTTP 1.1. By default, the browser is using the HTTP 1.1 persistent connection. Yes, HTTP, हाँ, पहले 1.0 we can say दो टाइप की कनेक्शन थे. जो पहले जो यूज होता था उसमें कुछ ऐसे प्रॉब्लम थे कि हर बार कनेक्शन एस्टैब्लिश करो, फिर उसको रिमूव करो, फिर टर्मिनेट हो जाता है, फिर से एस्टैब्लिश करो. देयर वर सम इश्यूज, दैट्स व्हाई द persistent connection was introduced. But now अभी persistent 1.1 ही यूज होता है. We can identify from the working से ऊपर से ही पता चल जाता है. नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर. ओके, अभी क्लियर है persistent नॉन persistent? It's very important for the mid-sem, right? Generally persistent नॉन persistent का डिफरेंस पूछा जाता है, या फिर ऐसा भी पूछा जा सकता है, explain non persistent connection with example, with diagram, right? Yes.
टीसीपी कनेक्शन क्लोज नहीं करता है, टर्मिनेट नहीं होता है। हाँ 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 हाँ, वैसे तो डिफरेंस है। मैं आपको एक पूरा लिस्ट बना के दूंगी, उसमें बहुत सारे डिफरेंस मेंशन है, बट मेन डिफरेंस तो यही है कि टीसीपी जो है वो कनेक्शन लॉस्ट नहीं करता है, राइट, एंड दैट इज दी वी कैन से द मेन डिफरेंस। नाउ मे यस यस सिक्योर्ड, हाँ, HTTPS, कई वेबसाइट में HTTPS, कई वेबसाइट में HTTP:// मोस्ट ऑफ एस, हाँ, उसमें सिक्योर्ड होता है। बैंकिंग की सारी वेबसाइट में एस होगा। There is a we can say man in the middle attack, अगर आपने नाम सुना है, राइट, तो ऐसे बहुत सारे चांसेस है। अभी तो उसके लिए कोई प्रिफर्ड सॉल्यूशंस नहीं है, बट यस वी कैन से देयर आर मोर प्रोबेबिलिटीज। जो मैन एंड मिडिल अटैक है वो ज्यादातर हम बोल सकते हैं। ओके, ये क्लियर है। नाउ मे आई मूव फॉरवर्ड। Okay, so HTTP message format. So you can see here HTTP message format. अभी ये message format से भी बहुत सारे questions आ सकते हैं, right? अगर persistent है, then it is HTTP 1.1. Now from this message, if it is asked which connection is used here in the request message, so already mentioned है HTTP 1.1 we can say, right? Now let's say कि यहाँ पे अगर ऐसा पूछा गया है that यहाँ पे object क्या है? What is the object path in the request message? Some directory page.html, that is the object path. ये जो है वो क्या है? Host name of the server, right? Now this is all about we can say the request message. Now response message. So if response message. Now if you look at the response message, then you can see here there are 4 fields in the response message: status line, header line, blank line and entity body. वैसे request message में क्या था? पहली जो line थी that is request line, header line, blank line and entity body. अब ये जो first line होती थी request message में, that is request line. But while in the response message, जो first line यहाँ पे है, that is a status line, right? So if you look at the status line, there are also 3 fields: protocol version, status code and phrase here, right? तो यहाँ पे protocol version कौन सा है? Obviously HTTP 1.1, it is already mentioned in the response message. Status code, that is 200 here, and phrase is okay, right? Now we have already discussed many status code. You might have generally experienced the 404, right? Generally आप कोई वेबसाइट को विजिट करते हो तो it will be like yes. तो कई बार हमें ऐसा स्टेटस कोड मिलता है that is 404 not found. तो इसका मतलब क्या है? We can say कि अगर कोई भी वेबसाइट को हम लोग विजिट करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि सर्वर के साइट पर वो कंटेंट अभी तक मीन्स अभी अवेलेबल नहीं है, so it will give a status code 404 not found, right? अभी एक it's already fixed. There are some status code which are already predefined. हाँ, let's say कि 304 है, 304, तो उसका मतलब क्या है कि whatever the content that you are searching for, that is not modified, right, or moved permanently. Let me show that. एक मिनट, स्टेट yes, you can see here there are different status code. 200, that is okay, that your request has been successfully reached. Then 301 का मतलब है कि
अभी तक जो डेटा आपने रिक्वेस्ट किया है दैट इज मूव्ड परमानेंटली टू सम अदर्स. 400 का भी एक मीनिंग है बट अभी मुझको एग्जैक्टली याद नहीं है. 404 दैट इज नॉट फाउंड and 504 that means whatever the content that you are looking for that is modified at the origin servers, right? अभी जो origin servers पे जो content है वो कुछ मॉडिफाई हुआ है और प्रॉक्सी सर्वर में आउटडेटेड डेटा है, तो वो कैसे रिजॉल्व होता है दैट विल डिस्कस इन दी कंडीशनल गेट, राइट? वेब कैशिंग पहले हम लोग पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि कंडीशनल गेट क्या है, राइट? हाउ वी कैन गेट दी अपडेटेड डेटा फ्रॉम दी ओरिजिन सर्वर. यहां तक क्लियर है? नाउ नेक्स्ट लाइन इज कनेक्शन क्लोज्ड. Actually, there won't be a 1.1 here. There will be 1.0. तो कनेक्शन क्लोज के बाद क्या होगा? कनेक्शन क्लोज का मतलब क्या है कि जैसे ही सर्वर ने ऑब्जेक्ट को सेंड कर दिया उसके बाद कनेक्शन क्लोज हो जाएगा. ये कंसेप्ट किसका है? नॉन परसिस्टेंट, राइट? That's why it is 1.0, right? Already डिस्कस किया कि पर्सन में क्या होता है, एक बार कनेक्शन एस्टैब्लिश होता है, TCP कनेक्शन will be open and the client can request for many objects as they want, right? So that is the concept of 1.1 persistent connection. तो अगर persistent होता तो यहाँ पे स्टेटस ऐसा दिखता, कनेक्शन keep alive. That means after sending the response message the connection will be open, right? Client जितनी चाहे उतनी रिक्वेस्ट कर सकता है ऑब्जेक्ट के लिए. So in that case if it is 1.1 here the status will be connection keep alive. But यहाँ पे 1.0 है, उसका मतलब क्या है? After sending the response message the TCP connection will be closed, right? Then next is date Saturday 7th July 2017 and some time is mentioned. तो ये डेट है वो कौन सी है? जनरली यहाँ पे कंफ्यूजन होता है. ये जो डेट है जब रिस्पॉन्स मैसेज क्रिएट किया गया था दैट ના નથી ચાલતું. જો તમને રિક્વેસ્ટ નાખવી હોય તો આજે નાખી દેજો. મેં લગાવ્યો છે પણ મારો અત્યારે મોબાઈલ ડેટા કનેક્શન જ ચાલુ છે. So this is the date where the response message was created, right? ये वो डेट नहीं है कि जब ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था. जनरली स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं कि जब ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था वो डेट यहाँ पे मेंशन है, बट इट इज द डेट व्हेन द रिस्पांस मैसेज वाज क्रिएटेड टू सेंड टू द क्लाइंट, राइट? सो दिस इज दिस डेट. सर्वर इट इज ऑलरेडी मेंशन अपाचे 1.3.0. ये कुछ सारी इंफॉर्मेशन है. देन लास्ट मॉडिफाइड व्हेन द ऑब्जेक्ट वाज लास्ट मॉडिफाइड, राइट? लास्ट ऑब्जेक्ट जो है उसमें कुछ चेंजेस आया तो वो लास्ट मॉडिफाई कब हुआ था? देन इट इज संडे 6 जुलाई 2017. कंटेंट लेंथ मतलब नंबर ऑफ बाइट्स इट रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर द डेटा पैकेट एंड कंटेंट टाइप दैट इज टेक्स्ट HTML फाइल, राइट? नाउ फ्रॉम दिस मैसेज इफ इट इज आस्क्ड दैट व्हिच ब्राउजर इज यूज्ड बाय द क्लाइंट, यानी कि कौन सा ब्राउजर यूज हुआ है इस रिस्पांस मैसेज में, इट इज मेंशन अपाचे 1.3.0. व्हिच HTTP कनेक्शन इज यूज्ड? HTTP, yes, नॉन परसिस्टेंट 1.0 दोनों मेंशन करना है. HTTP 1.0 नॉन परसिस्टेंट कनेक्शन. Then let's say if it is asked when the response message was created, आपको दो डेट दी गई होंगी, राइट? तो ऑब्वियसली जो रिस्पांस मैसेज क्रिएट हुआ था दैट इज सैटरडे 7 जुलाई 2017. ज्यादातर स्टूडेंट्स ये डेट लिख देते हैं, राइट? हाँ, ऑब्जेक्ट जब लास्ट मॉडिफाई हुआ था ये वो डेट है जब ऑब्जेक्ट वी कैन से रिस्पांस मैसेज क्रिएट किया गया था, दैट इज सैटरडे 7 जुलाई 2017. नहीं, जब सर्वर रिस्पांस मैसेज बनाता है क्लाइंट को सेंड करने के लिए एट दैट टाइम द डेट एंड टाइम विल बी नोटेड, दैट विल बी स्टोर्ड.
एट दी सर्वर साइड इट विल बी स्टोर। अब स्टोर क्यों करता है वो हम देखेंगे, स्टोर करने की जरूरत क्यों पड़ती है। कैसे ऑब्जेक्ट रिस्पॉन्स कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ एचटीटीपी रिस्पॉन्स मैसेज ओनली। यस ऑब्वियसली सर्वर में सब डेटा स्टोर्ड रहता है, जो भी हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं अगर उसके पास है तभी तो वो रिस्पॉन्स करेगा, राइट। और रिस्पॉन्स करता है कोई ऑब्जेक्ट के लिए तो सर्वर विल नोट ऑल दी थिंग कि ये रिस्पॉन्स मैसेज कब क्रिएट करा था, राइट। अभी क्लाइंट वो ऑब्जेक्ट को दूसरी बार रिक्वेस्ट कर रहा है तो क्या होगा, ऑब्वियसली प्रॉक्सी सर्वर में से ही वो डेटा जाएगा, बट प्रॉक्सी सर्वर है वो पहले वेरीफाई करेगा दैट व्हाटएवर द कंटेंट दैट आई हैव in my local storage space whether this object is updated or not, right। उसके लिए कंडीशनल गेट है जो हम लोग थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे। यहां तक क्लियर है। एग्जाम में ऐसे फॉर्मेट देंगे, दिया जा सकता है, देंगे नहीं मैं श्योर नहीं बोल सकती, बट हाँ ऐसा फॉर्मेट हो सकता है एंड फ्रॉम दैट 3 to 4 क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड। तो पहले ये पूरा देख लेना है कि उसमें कौन कौन से डिटेल 3 मार्क्स 4 मार्क्स डिपेंड्स कितने क्वेश्चंस दिए गए हैं। अगर ये है तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, बट यस ये मैसेज को थोड़ा समझना पड़ेगा आपको, राइट। इसमें इतना डिटेल में वो नहीं है कि नहीं समझ में आएगा, अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आराम से समझ आ ही जाता है। अगर परसिस्टेंट नॉन परसिस्टेंट नहीं पता है तो शायद नहीं आएगा, बट अब तो क्लियर है। हाँ हाँ हाँ, फिर जब क्लाइंट उसे रिक्वेस्ट करेगा उस हिसाब से उसको रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स मिलेगा। डाउट क्लियर? ओके सो यहां तक रखते हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Online students, please acknowledge me. Yes, ma'am. Employee code. Okay, online students, write your enrollment number in the chat box. Offline, मुझे यहाँ पे बता देंगे। Yes, offline students, AI. Okay, AI. Yeah. 01. आप online students write in the chat box. I am asking to offline students.
AI 18, next 3, next 5, big data, दोनों means तीनों big data, AI 10, अच्छा 62, AI 62. Okay, check these numbers. Offline student, ऑनलाइन स्टूडेंट सारे मीन्स लिख दिया सबने. Okay, almost students have left because array. I want to announce something. Okay. Okay. So one more thing that I want to ask you that have you started the CCNA course or not? कितना हुआ? हाँ. Hello, ma'am. 20%. Yes, Bhavdeep. Ma'am, the exams were not available before 1 or 2 days. Now it's available. Have you checked? No, ma'am, I haven't checked today, but Because I already said to Saturday. the concerned faculty for the activation of the exam. Okay, ma'am, I will check you and let you know in the next practice. Okay. Let me know in the next session. Yes, ma'am. You started second course. Okay. बट फर्स्ट वन पहले कंप्लीट करना होगा क्योंकि मिड वन के पहले आपकी फाइनल एग्जाम है वो मॉड्यूल 1 की होगी, राइट? व्हाट अबाउट यू? इंट्रोडक्शन कंप्लीट हुआ तुम्हारा 20%? ओके, व्हाट अबाउट यू? आप सबके नाम नहीं आते? व्हाट अबाउट ईसीआने कोर्स? पर आज तो पहली बार मिल रहे तो कैसे पता होगा कौन हो? बिपिन, अच्छा. सीसीएनए कोर्स, सिस्को पैकेट ट्रेसर वो भी अलग है, सीसीएनए कोर्स भी अलग है. हाँ, सीसीएनए स्टार्ट कर दो. सिस्को पैकेट ट्रेसर है वो लैब प्रैक्टिकल्स है और सीसीएनए है वो कोर्स अलग से है, सिस्को सर्टिफाइड कोर्स. वो सिस्को पैकेट ट्रेसर वो लैब में जो करते हैं वो प्रैक्टिकल्स है और सीसीएनए जो कोर्स है वो आपको अलग से दिया गया है, राइट? एंड दैट विल बी अ पार्ट ऑफ योर टर्म वर्क. 2 कोर्स है ना? ऐसा नहीं है क्योंकि सारे क्लास में यही कोर्स चल रहा है तो सबकी एक ही दिन एग्जाम होगी, फाइनल एग्जाम, तो वो एक दिन में कंप्लीट करना है और इस बार ये रीएक्टिवेट नहीं होगा. ओवरऑल 25 मार्क्स है, मीन्स मॉड्यूल 1 के 25 एंड मॉड्यूल 2 के 20, सॉरी 25 एंड 15. हाँ, नहीं ये तो जो आपने कंप्लीट किया है वो पूरा ही होगा. ये तो मिड सेमेस्टर में होता है ना 30-30 तो उसका एवरेज, और 100 मार्क्स की जो एग्जाम होती है उसमें 50%. बट ये जो मार्क्स है आपको जितने आप गेन करोगे वो पूरा ऐसे ही काउंट होंगे. ये वो पूरा सीओपीओ ऊपर से है, मीन्स ये आपका सब्जेक्ट कितना कोर है उस हिसाब से पूरी क्रेडिट वो.
क्या कंप्यूटर नेटवर्क पहले से पढ़ना है? ओके, मैंने पीपीटी यूनिट 1 की तो अपलोड कर दी है, एक बार ई कंटेंट में देख लो। क्या ये वाले ऑब्वियसली क्लास में पढ़ाया वही है जो क्लास में मैंने ऑनलाइन में पढ़ाया था, वही नोट्स है ये नोट्स ये बहुत रफ है, समझ में आ जाएगा, मैं प्रॉपरली नहीं है। हाँ, रेफरेंस के लिए रख सकते हो। 5 ही चैप्टर्स है हमारे सिलेबस में, देयर आर ओनली 5 चैप्टर्स। 4 चैप्टर्स है वो मैं लेने वाली हूँ, और जो ट्रांसपोर्ट लेयर है वो नितुल सर जो आपका लेक्चर ले रहा है वो। ओके, हम एक्स्ट्रा क्लास कुछ कंडक्ट कर लेंगे, ठीक है। 1-2 सेशन हम लोग सैटरडे कंडक्ट करेंगे, जिसको भी डाउट सेशन है या फिर कुछ भी है, विल अरेंज 1 एक्स्ट्रा सेशन ऑन सैटरडे, क्योंकि सैटरडे को आपका एकेडमिक्स नहीं रहता है, राइट। सो विल ऑल दिस डू मिड से पहले, ओके हो जाएगा आराम से। सीएन में इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कंसेप्ट बहुत ही इजीली पढ़ा दूंगी। बुक देखोगे थोड़ा स्ट्रेस्ड आउट हो जाओगे कि इतनी बड़ी बुक कैसे पढ़े, पर इतना ऐसा कुछ है ही नहीं, राइट। अब पहले से पढ़ोगे, लास्ट में सारे कंसेप्ट एक दूसरे से रिलेटेड ही है। अगर आगे का समझ में आया, पीछे का समझने में इतना मुश्किल नहीं होगा, बट आगे के लेक्चर्स अगर स्किप किए हैं, ऑब्वियसली यू विल फेस डिफिकल्टी इन दी नेक्स्ट। सारे जो चैप्टर्स है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो थोड़ा होगा वो। हाँ, सिस्को पैकेट के तो प्रैक्टिकल्स हम जो लैब में कर रहे हैं वही होंगे। पर ये जो कोर्स जो दिया है और जो सिस्को पैकेट के जो प्रैक्टिकल्स मैं करवा रही हूँ वो इतने इंटरकनेक्टेड नहीं है, क्योंकि मैं जो प्रैक्टिकल करवा रही हूँ दैट आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक, राइट। वो पूरा बेसिक से समझाती हूँ कि अगर सपोज लेट्स से कि हमने ईमेल कॉन्फ़िगरेशन का जो प्रैक्टिकल लास्ट टाइम किया है, हुआ है कि नहीं हुआ है, शायद आपकी लैब बैच में नहीं हुआ होगा, राइट। तो ईमेल सर्वर का जो हमने कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट किया था, तो पहले मैंने पूरा समझा दिया कि किसके बारे में है, क्यों यूज होता है, राइट, एंड देन वी स्टार्टेड द प्रैक्टिकल, राइट। सो यू वॉन्ट फेस एनी डिफिकल्टी। क्या सेशन? हाँ हाँ हाँ, कब स्टार्ट करना है ऐसा? सैटरडे को रख सकते हैं अच्छा, सैटरडे को रखते हैं, क्योंकि दूसरे क्लास में भी मेरे सब्जेक्ट्स रहते हैं हायर सेमेस्टर में, तो फिर टाइमिंग क्लैश होगा, राइट। और अभी तो फर्स्ट सेमेस्टर का वाइवा चल रहा है, सो आई एम क्वाइट बिजी। तो सैटरडे को हम अरेंज कर सकते हैं नेक्स्ट वीक में। Okay, so online students may leave the session.